Hello friends, I am Anwesha and welcome to my channel. So today I have my mother with me. Namaste. And together we have decided to prepare chili fish. तो ये मम्मी के खुद का रेसिपी है ना मम्मी? खुद का रेसिपी है. तो ये है हमारा होम स्टाइल चिली फिश. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. And before starting the video, I would like to request all of you to please subscribe to my channel and also please click the bell icon so that you get notified when I post my next videos. So let's start it. We have marinated basa fish fillet for 15 minutes with 2 spoons of white vinegar, 1 spoon of black pepper powder and 1 teaspoon of salt. Now we are adding ginger paste, 2 spoons of corn flour and 1 whole egg to it, and then we will be mixing it really well. Basa is a soft fish and it cooks really fast. तो मैं आपको बता दूं मेरी मम्मी बहुत ही एक्साइटेड है कि उनका ये वीडियो YouTube में आएगा. तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. तो मम्मी को नई नई चीज़ें बनाने का बहुत शौक़ है. उनको कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है और वो जब भी मेरे पास आती है तब नई नई चीज़ें वो बनाती है मेरे लिए. तो ये चिली फ़िश होम स्टाइल चिली फ़िश है. शायद रेस्टोरेंट के टेस्ट के साथ मैच नहीं करेगा लेकिन ये बहुत ही टेस्टी है. तो देखिए मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ. मैं नहीं मिक्स कर रही हूँ, मम्मी मिक्स कर रही है. मैं तो वॉइस ओवर कर रही हूँ. तो ये एक बार मिक्स हो जाए उसके बाद हम एक पैन में ऑयल को हीट करेंगे. तो चलिए फिश तो मिक्स हो गया. So now we are adding oil to a pan. We are using olive oil, refined olive oil. So you can use any kind of vegetable oil. And we will let the oil get heated up. Now we are adding fish pieces to it, and we will fry the fish pieces until they turn golden brown. So it will take some time, maybe 3-4 minutes. So if you want, you can skip adding the egg to your chili fish, but I really like the taste of egg in my chili fish. So I have asked my mom to add it. Generally restaurants में वो लोग egg add नहीं करते हैं. कॉर्नफ्लावर और मैदा का ही वो लोग कोटिंग बनाते हैं. लेकिन egg add करने से एक अलग ही सॉफ्ट टेक्सचर आता है और बहुत टेस्टी लगता है. तो ये फिश पीसेस फ्राई हो रहा है. तो हम यहाँ पे 4 पीस फ्राई करके आपको दिखाएंगे. तो बाकी सब पीसेस हम फ्राई कर लेंगे. तो वो मैं वीडियो में नहीं दिखाऊंगी वरना वीडियो तो बहुत ही लंबा हो जाएगा. फिर आपको भी देखने का मन नहीं होगा. फ्राई हो रहा है फिश. देखिए गोल्डन ब्राउन कलर भी आ रहा है. Now we are keeping the fried fish pieces in a separate bowl. देखिए कितना सुंदर कलर आया है. एरोमा भी बहुत अच्छा आ रहा है. Now I'm again adding oil to the same pan. फ्लेम मीडियम है. देखिए जो आग है ना वो पैन के बाहर नहीं आ रहा है. So once the oil gets heated up, we are adding onion, ginger paste and garlic. We are letting the onions get softened up. फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा क्योंकि फ्लेम अगर हाई हो जाता है तो अनियंस जल सकता है. इसलिए फ्लेम को मीडियम रखना ही सही है. तो यहाँ पे हम ऐड कर दिए जिंजर पेस्ट.
आगे हम गार्लिक ऐड कर रहे हैं। To this we are adding sliced green chilies and mixing it well with the onion. Now we are adding red bell pepper, capsicum, and then we are giving it a nice stir. We will let it cook for 5 minutes. The capsicum and the bell pepper has to soften up, and it takes some time. Now we are adding some salt. So you have to be really careful while adding salt in this step, because the sauces also contain salt, and in the first step while marinating the fish we had added salt as well. We are giving a nice stir to it. Now the bell peppers, capsicum and onions have softened up. So to this we are adding tomato sauce. Now we are adding green chili sauce. This actually gives the spicy taste to the chili fish. And we are adding soya sauce. This gives the tangy flavor and also some color. देखिए कैसा ब्राउन कलर आ गया। We are adding 1 cup of water to it. And to this we are adding the fried fish pieces. I really like the taste when the fish pieces absorb the gravy. I know there are people, I think most of the people prefer the fish pieces to be separated and to pour the hot gravy on it, but I like it this way. To this I am adding corn flour mixed with water. I am adding the corn flour to give it a thick consistency. Finally, 1 spoon of white vinegar is added. तो अब रेडी हो गया हमारा गर्मा गर्म होम स्टाइल चिली फिश। मुझे तो देख के ही खाने का मन कर रहा है। ये वीडियो शूट करना खत्म होने के बाद ही मैं खाना स्टार्ट कर दूँगी इसको।
So our homestyle chili fish is ready. To be true, I haven't done much. She has done most part of the work. So guys, if you have enjoyed the video, then please comment below. It will make our day. And also please don't forget to subscribe to my channel and also click the bell icon so that you don't miss my next videos. See you again. Bye.